हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडविन्स। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? प्लीज कमेंट हियर इफ आई एम ऑडिबल टू यू। Hello students, welcome to Eduins, your only trusted online education platform. Today we are going to discuss CBSE paper of 2022 and I can't discuss the entire paper in a single class. So section A today and आप लोग इसे ज्वाइन कर जाइए। Okay, so without wasting more time, we will start our class. So let's see what's in store for us today. Before that, हम आपको बताना चाहते हैं कि एडविन्स आपके सहायता में ऑलवेज आपके पास है, आपके साथ है। इफ एनी डाउट, प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर। यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस। सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी टॉपिक को लेके आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को तो पता है, अगर आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई नेबर है, कोई रिलेटिव है, ऐसा कोई है कि जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, उनको भी ये सब असिस्टेंस की जरूरत है। जो पर्टिकुलरली जो बोर्ड एस्पिरेंट्स है 2026 में, इस साल जो लोग सीबीएसई देना मतलब बोर्ड एग्जाम है जिन लोगों का, उनके लिए स्पेशली क्राफ्टेड क्लासेस अभी चल रहा है। 3 बजे से 4 बजे तक हर दिन ये लाइव क्लासेस होते हैं। The subjects that are included here are physics, biology, maths, EVS and Bengali. So please do join our class and share the video. आपके जितने सारे जानकार लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, उनको ये न्यूज फैला दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आपकी तरह वो ये लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर सके और उनका भी कुछ डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, सो आज हमारा पहला सम हम देखते हैं क्या है। ओके, the mode of a grouped frequency distribution is 75 and the modal class is 65 to 80. The frequency of the class preceding the modal class is 6 and the frequency of the class succeeding the modal class is 81. Oh, sorry, it's 8. ये गलत तरीके से ये प्रिंट हुआ है। It is 8. Find the frequency of the modal class. ओके, तो हमको ग्रुप जो डेटा होता है हमारा, ग्रुप डेटा का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रुप डेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोड फॉर ग्रुप डेटा, हमको कैसे लिखना है वो, मोड इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज L1, या फिर हम L1 नहीं लिखते हैं, L ही लिखते हैं, सिर्फ L प्लस फिर फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F2 इंटू H। यहाँ पे नोटेशन कुछ ऐसे लिखेंगे हम,
F1, F0, F2, ठीक है। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये हर चीज को हमको पहले एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज L? L is the lower class boundary of the modal class. Okay, now what is F0, F1 and F2? F0 actually F1, it is the frequency of the class preceding to modal class. F2 होता है frequency of the class succeeding to modal class, और F0 होता है frequency of the modal class. है तो हम नोटेशन कुछ ऐसे यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है, देखो हमारा यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे हमारा क्लास बाउंड्रीज होते हैं, क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे होते हैं फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे होते हैं फ्रीक्वेंसीज। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, लोअर क्लास बाउंड्री टू अपर क्लास बाउंड्री। द फर्स्ट आता है L1 टू U1, सेकेंड होता है L2 टू U2, ऐसे करके हम n ऑब्जर्वेशंस को ऐसे लेते हैं Ln टू UN, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, ये होता है F1, F2, दिस इज Fn। फिर हमको क्या ढूंढना पड़ता है यहाँ से, द वैल्यू विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मोड? Mode is the value with maximum frequency, the observation with maximum frequency, right? अगर यहाँ पे कुछ एक ऐसे ऑब्जर्वेशन आता है कि सपोज करो कि यहाँ पे एक जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मैक्सिमम वन, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे FM है कुछ, ये है मैक्सिमम, राइट? अगर ये क्लास ना दिया होता तो if FM is the maximum frequency showing in the table, then the value corresponding to maximum frequency, the value of the observation or value of X corresponding to the maximum frequency gives us the mode. But what happening is here is, यहाँ पे मोड जो है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास है। ओके, दिस इज देयर इज अ क्लास, जैसे कि 10 to 20, 30 to 40 ऐसे करके एक क्लास दिया हुआ है। ओके, सो इस क्लास में से कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू जो कि हम मोड कंसिडर कर सकते हैं, उसको हमको निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आता है वो उसको हम F0 लेते हैं, एक्चुअली उसको हम F1 लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आता है उसको हम F1 लेते हैं, मतलब वही होता है हमारा मोडल क्लास, मतलब that is the value with maximum frequency, the frequency that have maximum value, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही होगा हमारा मोडल क्लास। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको मतलब जहां पे टेबल में जहां पे हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास होगा मॉडल क्लास, और वो फ्रीक्वेंसी को हम F1 ले लेंगे।
Okay, we will suppose that frequency as f1. So f1 is the frequency of the model class. अब f0 क्या है? ठीक उसके प्रीवियस जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी होगा f0 अकॉर्डिंग टू द आवर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू आवर नोटेशन. ये नोटेशन पहले समझना है हमको, ठीक है. f1 will be the frequency of the model class और f0 will be the frequency of the previous to the model class. Okay, and f2 will be the frequency of the next class to the model class. Okay, तो यहां पे हमारा डेटा क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया है क्या, देखते हैं. दिया है कि mode of a group frequency distribution is 75. So the mode is already given. So we have our mode as 75. Okay. Then what we have, the modal class is 65 to 80. Oh. ओके, तो हमको दिया हुआ है कि मोड इज इक्वल्स टू 75. आवर मॉडल क्लास इज दिया, क्या दिया हुआ है, 65 to 80. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 into f1 माइनस f0 माइनस f2, राइट. तो यहाँ पे L इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 65. मॉडल क्लास का जो लोअर बाउंड्री है वही होगा L. तो हमारा मॉडल क्लास अगर 65 to 80 है तो इसका मतलब हमारा L हो गया 65. फिर हमारा F0 मतलब प्रीवियस क्लास, वो क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class is 6. Okay, तो ये हो गया 6. And the frequency of the class succeeding the model class is 8. Right? So F2 हो गया हमारा 8 according to our notation. तो हमको निकालना क्या है, फिर हमको निकालना है F1. What is the frequency of the model class? ओके, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज ऐसे दिए हुए हैं और हमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1. सो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट. 65 प्लस F1 हमको नहीं पता, x ले लेते हैं इसको, लेट इट बी x, एंड F0 दिया हुआ है 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6 माइनस व्हाट 8. ठीक है, अब 75 माइनस 65 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 14. 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 2x माइनस 14. इसका मतलब 20x माइनस 140 इज इक्वल्स टू x माइनस 6. ओके, अब इसको इस तरफ लेके आते हैं. 20x माइनस x इज इक्वल्स टू ये. ओके, okay, we just missed a point, that is into h. What is h? H is the class width. What is the class width? Class width is the difference between the upper limit and the lower limit, right? इसका मतलब 80 है, ये है 80 आपका अपर लिमिट है और 65 आपका लोअर लिमिट है. तो 80 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 15. यहाँ पे h हो गया 15. ओके, तो यहाँ पे एक 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, which we missed. तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा ये स्टेप में. यहाँ पे हो गया 20x माइनस 140 और यहाँ पे आ गया 15x माइनस 90. ओके, तो इसको इस तरफ अगर लेके आएंगे 140 माइनस 90, तो ये आ गया हमारा 5
and what is this? This is 50. So x is equals to 10. Now this is our required answer. So what is the value of the frequency of the modal class? The value of the frequency of the modal class is 10. अब देखो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस दिए हुए थे, मॉडल क्लास का इंफॉर्मेशन मिसिंग था, तो ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है. सम इज वेरी इजी, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला. अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि तुमको h निकालने को दे सकता है, या फिर बाकी सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो सकता है, या फिर लोअर लिमिट निकालने को बोल सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट तुमको मोड निकालने को भी बोल सकता है. ठीक है, तो ये सारे एक फॉर्मूला है, उससे बहुत सारे सम्स आ सकते हैं. देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज, जैसे कि एक दो डिजिट चेंज करके, एक दो चीजें चेंज करके देयर आर बहुत सारे वेराइटीज कैन बी मेड आउट ऑफ अ सिंगल सम. ओके ओके, ये तुमको समझ में आ गया होपफुली. तो वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सम. How many natural numbers are there between 1 to 1000 which are divisible by 5 but not by 2? We need to find out the number of numbers. How many numbers are there? How many digits are there? Digit mat bolo, numbers are there between 1 to 1000 which are divisible by 5 but not divisible by 2. देखो 1 to 1000 नेचुरल नंबर्स, उसके बीच में कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है. कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होना है तो क्या उसका मतलब, व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी? बाय 5. हमको पता है इफ अ नंबर हैव 0 or 5 as its unit number, once number, ऐसे हम नंबर कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ones, फिर लिखते हैं tens, फिर लिखते हैं hundreds, फिर लिखते हैं thousands, ऐसे करके लिखते हैं ना कोई भी नंबर को हम. तो अगर किसी नंबर के जो ones डिजिट है, इसमें अगर 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो ये नंबर डिविजिबल होता है 5 से. और 2 का डिविजिबिलिटी क्या है? If a number is divisible by 2, then it must have at its ones place which numbers? Any even number or 0. अगर कोई भी इवन नंबर किसी के वंस डिजिट में आ जाए या फिर 0 आ जाए वंस डिजिट में, तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 होता है. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? देखो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आएगा तो वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा. इसीलिए हमको यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2. इसका मतलब हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि द नंबर विच वी आर कंसिडरिंग does not have 0 at its units or its ones place, right? So अगर 5 से डिविजिबल होना है और 0 नहीं होना है वंस डिजिट में, तो क्या होना है उसके वंस डिजिट में? Only 5. So the numbers which have 5 in their or at their ones digit between 1 to 1000, हमको ऐसे कितने सारे नंबर्स मिलेंगे ये हमको पूछा है यहाँ पे. ठीक है, सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव बिटवीन 5, 15, 25, 35, ऐसे करते करते 995 विल बी द लास्ट टर्म विच विल बी डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 2, विच इज लेस देन 1000. ओके, हमको क्या निकालना? अब देखो, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट एन एपी. दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
which have first term as 5, common difference as 10. Now we need to find, and the last term, that is the nth term, as 995. Now what we need to find? We need to find the number of terms, that is n. What is the value of n over here? That we need to find. तो ठीक है, चलो हमको पता है ना कि Tn is equals to a plus n minus 1 into d. अब Tn क्या है? 995. a क्या है? 5 plus n minus 1 into d क्या है? 10 है. यहाँ पे we need to put the value here. ठीक है, अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. 995 minus 5 is equals to n minus 1 into 10. 990 n minus 1 into 10. ये हो गया कैंसिल. फिर 99 is equals to n minus 1. इसका मतलब n is equals to 100. Taking 1 at this side, हमको n is equals to मिल गया 100. Okay, so how many natural numbers are there? There are 100 natural numbers among 1 to 1000 which are divisible by 5 but not divisible by 2. Clear? Okay, let's move on. If the sum of roots of a quadratic equation, this is 13 by 21 more than the product of the roots, then find the value of k. What an interesting sum. If the sum of the roots this more than the product of the roots, okay, so first what we need to do? ky square 11y plus k minus 23 is equals to 0. This is our quadratic equation which is given to us. Now let us suppose roots are alpha and beta. We have two roots here, alpha and beta. Any quadratic equation always possesses two roots. Now we know if the standard form is considered, standard form of what? Standard form of quadratic equation is considered, then the sum of the roots will be minus b by a. Minus b by a. And what is the product of the roots? Products of the roots will be c by a. Now just let us consider the given equation, the form of the given equation with the standard form of the quadratic equation. Okay, so what is that? We have a is equals to k, b is equals to minus 11 and c is equals to k minus 23. These three things we have. Now we need to find out the sum of the roots. If the roots are alpha and beta, then sum of the roots alpha plus beta will be what? Will be minus b by a. In this case, we will have 11 by k. Since there is already a minus sign in front of b, and then this minus and this minus will dissolve and it will become 11 by k. And the product of the root will be c by a. Now we have c as k minus 23 and a is this. So this is our sum of the roots and product of the roots. Now what we have? The given condition is the sum of the roots is 13 by 21 more than the product of the roots. That means the difference, sum of the root is more than product of the roots. How much more? That is 13 by 21
amount. So, according to our given problem, according to the problem, what we have? We have sum of the roots minus product of the roots is equals to 13 by 21. That is what given to us. Okay. Now, let's just simplify this. K, 11 minus K plus 23. This minus and minus will turn to plus. What will be this? This is 34 minus K. This is 13 by 21. Now just cross multiply this. 34 into 21. How much this become? (34 into 21). That is 714 minus 21 is equals to 21K. (714 minus 21K is equal to 13K. Let's just separate this. Now we need to find the value of K. How will we do this? Just get the K's at one side, let them be at the left hand side. So 34K is equals to 714. So K will be is equal to what? 714 divided by 34, which will give us 21. Find the value of K. What is the value of K then? The value of K will be 21. Okay, as simple as that. It's very simple sum. What we will have to do? We'll just compare the given form of the quadratic equation with the standard form of the quadratic equation, which is ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay. Now we'll have to compare A, B, C. We'll have to compare the equations and find out A, B, C. Why? Because we need to find out the sum of the roots and the product of the roots. We know the sum of the roots is minus b by a and the product of the roots is c by a. We'll just find out a, b, c from our given problem and then just put the values and then we will have the equation formed like this and then we'll solve it for K. Okay. Okay. So let's go to the next sum. If x is equals to minus 2 is the common solution of quadratic equations this and this, then find the value of a square b. Okay. If x is equals to minus 2 is the common solution of quadratic equations, this and this, x is equals to minus 2 is the solution. Common solution means x is equals to minus 2 is the solution of this equation and this equation too. Both the equation have same solution as x equals to minus 2. Then find the value of a square b. So what will be that? If x is equals to minus 2 is a solution of the given equation, then we can say x is equals to minus 2 will satisfy the equation. That means what? That means if we put minus 2 in place of x, the equation will be
satisfied. Okay, so what is this? This is 4a minus 3a minus or equals to 2. Now what we have a is equals to 2, and then x square plus bx plus b is equals to 0, minus 2 square plus b into minus 2 plus b is equals to 0. We have 4 minus 2b plus b is equals to 0, and hence just take the b's on the other side. We have 2b minus b, that is 4 is equals to b, right? So what we have, a square b, that is 2 square into 4, that is 4 into 4 is 16, right? So what we have the value of a square b as 16. Okay, I hope you get it. Then let's move on to the next sum. All right, now what we have? Find the mean of the following frequency distribution. We are given here a frequency distribution, and we are here to find the mean of the given frequency distribution. Now, whenever we need to find out the mean of the frequency distribution, what actually we need to find? That is x bar. What is the formula for x bar? That is summation xi fi divided by summation of fi. That means we need to first find out the product of the observation with the frequency value, and we need to divide it by the total of the frequency values. Okay, so for that we need to just extend our table a bit, right? What we have, see, these are the class boundaries, that is Li to Ui, okay, and these are the frequencies, FIs, right? What we need to find out here is the class mark, that is xi is first. What is xi? That is Li plus ui divided by 2. That means the lower limit plus the upper limit divided by 2. This will give us the class marks or the observation, individual observations of x. So what will happen here? This is Li is 1 and Ui is 5. So what will our x1 will be? 1 plus 5 divided by 2. 1 plus 5 divided by 2. That is 6 divided by 2. That is the first observation will be 3. Right? Then the next one, x2. What will be our x2? 5 plus 9 divided by 2. That is 14 by 2. That means 7. Then what we have? 9 plus 13 divided by 2. 22 divided by 2. That is 11. And then x4 is equals to 13 plus 17 divided by 2. 13 plus 17 means 30 divided by 2 gives us 15. So these are our xi's, and we have our fi's like this. Then what we need to find? We need to find xi into fi. What will be that? That is xi multiplied by fi. That is 3 into 4, 12. Here we get 12.
Then 7 into 8, 56. Then 11 into 7, 77. Then 15 into 6, 90. Right? Then we need to find out the total. That is summation xi into fi. And here we will get summation of fi. Sum of all frequencies and sum of the product of this xi fi. We need to find out these two first. So what will be that? Summation fi will be is equals to 25. Let's just sum them up. It will be 25 and this will be 235. Right? So what will be our mean? 235 divided by 25. Let's just calculate this. 9.4. So the mean of the given observation will be 9.4. Okay. Chalo then, let's move on to our next sum. This is the figure 1. There are two concentric circles with center O. If ARC if ARC and AQB are tangents of the smaller circle from the point A lying on the larger circle, find the length of AC if AQ is equals to 5 centimeter. Let's first understand the sum. What we have here, we have two circles, two concentric circles. What is the meaning of concentric? If more than one circles have same center, then those circles are called concentric circles. Here we have two concentric circles which have their center here, that is at O. Okay. Now we have the bigger circle outside and the smaller circle inside the bigger circle. Now we have told that ARC and AQC, these two are the tangents of the smaller circles, and this A point lies on the circumference of the outer circle, that is the bigger circle, right, lying on the larger circle. Now we need to find out the length of AC. We need to find out the length of AC here, right? If AQ, that is this, is given as 5 centimeter. This is 5 centimeter. It is given. First, we need to understand that since AC and AB both are tangents, AC and AB both are tangents. Since these two are the tangents of the circle, then we can say that it will always be like this. AC will be equal to AB. AC will always be equal to AB. If two tangents are drawn from outside a circle, then the length of these two tangents will always be equal. So here AC is equal to AB, right? And AQ is equals to 5 centimeter. It is given. What we will do is,
we'll just join, let me use a different ink over here. We just join QO and RO, right? Now, from O, if we join R, what we will have? We will have a right angle formed over here, right? This is the perpendicular, and not only perpendicular, since AC and AB are the chords of the bigger circle. See, these AC and AB may be the tangent of the inner circle, but these two are the chords of the outer circle, right? So the chords of the outer circle, and hence any line drawn from the center of the circle to the chord of the circle will always be bisected, right? Hence, OR bisects AC, and what was that? OQ bisects AB. We know it, right? If there are two chords, if there is a chord of a circle, we can draw it over here like this. Suppose there is a chord of a circle, and here's the center of a circle, right? Now, if we draw a perpendicular on the chord, it will always be a perpendicular bisector. It will always bisect the chord, right? So, here OQ bisects AC and OR bisects AC and OQ bisects AB. Since this bisects, therefore we can say AQ is equals to QB is equals to 5 centimeter. Since it is given AQ is 5 centimeter, and hence this will also be 5 centimeter. Again, that means AB is equals to AQ plus QB, that is equal to 5 plus 5 centimeter, that is equals to 10 centimeters. That is, this one is 10 centimeters. Now, since this is 10 centimeter, what will be the length of AC? This will also be 10 centimeter. Why? Because it is already said that since these two are the tangents on a circle, so the length of these two will always be equal. Now, if AB is 10 centimeter, then the length of AC will also be 10 centimeter. Got it? I hope you understand. So let us move to our next problem. Right. Next we have a sum from the mensuration. Right. The curved surface area of a right circular cylinder is 176 square centimeter and its volume is 1232 cubic centimeter. What is the height of the cylinder? What are the parameters that a right circular cylinder have? First, let us write them. It has a radius. We call it R. It has a height. We call it H, and the volume will be pi r square H. Is the measurement of the volume of a right circular cylinder, and the curved surface area will be what? And the curved surface area will be
pi RH. 2 pi RH, that will be our curved surface area, right? Those who are Bengali student over here, or those who can understand Bengali a little bit or more, they can go to our another video which just uploaded yesterday. It was a one shot on the entire mensuration part of the class 10 syllabus. It was based on actually West Bengal board syllabus, but it will do with CBSE syllabus also. Okay. So if you have a little bit of knowledge in Bengali, because the entire class is in Bengali only, अगर तुमको बंगाली थोड़ा बहुत भी आता है तो you can go and check the video. There is the entire mensuration explained, why the surface area becomes this, why the volumes becomes this of different shapes. You can go and check that and you will never have any doubt, any confusion on any formula of mensuration. Okay, right. So what is the height of the cylinder? Now we are given what this is 176 and this is 1232. Now let's do one thing. We just divide 1 by 2. Just divide 1 by 2. What we will get? Pi r square h divided by 2 pi r h. That is equals to 1232 divided by 176. Kete galo. So r by 2 is equals to 1232 divided by 176. Can anybody tell me what is the value of this? इसको कैलकुलेट करने से हमको मिलता है 7. This is not 0.7. This is 7. So r equals to 7 into 2, 14 what centimeter. So r is equals to 14 centimeter. Now we have to find out the value of the height of the cylinder. So put the value of r in any of the one equation, you will get the value of the height. We'll just put it here, 2 pi RH. Let's just do it separately. We have r is equals to 14. We have r is equals to 14 and 2 pi RH is equals to 176. It is given. So let's just put r is equals to 14 and find out the value of h. 176 divided by 2 and 14, and if pi we just take it at the right side, what is the value of pi? Pi is 22 by 7. It will come at the denominator and hence the 7 will go to the numerator. It will be like this. Now let's just calculate. This is 8. Now this is 4 and this is 2. So what we have height is equals to 2 centimeter. Height of the right circular cylinder is 2 centimeters. Okay. So if you don't have a problem, we just move to the next sum. The largest sphere is carved out of a solid cube of side 21 centimeter. Find the volume of the sphere. Let's just make the diagram of this first. We have a cube over here.
and we are carving out a sphere out of it. यहाँ पे एक स्फीयर है, स्फीयर है नहीं, ये इस स्फीयर को हम इससे काट के बाहर ले रहे हैं, इस स्फीयर को, इस वुडन ब्लॉक और whatever it is, we are just carving out of the solid cube, right? Now ये जो क्यूब है इसका हर एक साइड का जो मतलब डायमेंशन है वो है 21 सेंटीमीटर। हर एक साइड का जो मेजरमेंट है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो सपोज कि हम कैसे इसको दिखाए तुमको, ये 2D फिगर में 3D है, दिस इज द क्यूब एंड दिस इज द स्फीयर। अब सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, एक क्यूब है, क्यूब के अंदर से एक स्फीयर को तुमको कट आउट करना है, ठीक है। अब उस स्फीयर के अगर यहां से यहां तक का लेंथ तुम ले लो, ये कौन सा लेंथ तुमको मिलेगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मच? दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ अ साइड। ये चीज इसके अंदर है, ठीक है। और इसको अगर स्ट्रेट करके देखोगे, ऐसे सीधा पर्सपेक्टिव में देखोगे, तो ये जो है ना पूरा, ये तो ऊपर से लेके नीचे तक कट किया गया है। अब ये ऊपर से लेके नीचे तक इसका पूरा जो ये है वो हाइट है। हाइट क्या है इसका? 21 ही है। इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तो सेम ही है। तो इसका जो हाइट है दैट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ओनली। ये क्यूब का जो हाइट होगा दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ओनली, राइट? So the diameter of the sphere is 21 centimeter. Then what is the radius? Radius will be this. Okay. Find the volume of the sphere. So what is the volume? 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi मतलब this r cube 3 केटे गलो 2 2 वो कट गया और ये 2 इसमें 11, इसका मतलब 21 into 21 into 11. What will be the value of this? 21 into 21 into 11. This is 4851 centimeter cube. 4851 centimeter cube. Let's move to the next sum. Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other. Okay. So here's the problem, which is a problem of construction. It is quite not possible to do this sum here because we don't have any equipment to construct, and I think it is already out of your syllabus too. So we just skip the sum and go to the next one. Find the value of P for which the quadratic equation this has real and equal roots. Okay. We have a quadratic equation like this. This is the structure of our quadratic equation. Now it has real and equal roots.
First of all, it is not in the proper or the standard form of quadratic equation. We just need to make it in the standard form of quadratic equation. Then for that, we just simplify this thing. What will be this? This is x square minus 2x minus 4x plus 8 plus x minus 1 whole square. Okay, we'll just simplify it in the next step. So p into x square minus 6x plus 8 plus this is x square minus 2x plus 1 is equal to 0. Now what we will do is we'll just make it in the form of a quadratic equation. That means some constant into x square will be there, and then some constant into x will be there, and then there will be a constant part. So let's just put it in that way. So px square, and this x square comes here, minus 6px minus 2x, and then 8p plus 1 is equals to 0. Now let us put it in the standard form. Minus let's say 6p minus 9 plus 2x plus 8p plus 1 is equals to 0. Now if we compare this with the standard form, what we will get? We will get a is equals to p plus 1, b is equals to minus 6p plus 2, and c is equals to 8p plus 1. Now what we are given? We are given that this equation has real and equal roots. Now to have real and equal root for a quadratic equation, what do we have? We have the value of the discriminant is equal to 0. Now how do we calculate the value of the discriminant? D, that is equals to b square minus 4ac. Put the values from these and this, put it equal to 0, right? So this is the discriminant. If in case you forget, ठीक है, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यूज को डाल देते हैं और फिर देखते हैं p का वैल्यू हमको क्या मिलता है. We'll just remove it. Okay. So b square, that means 6p plus 2. Now we have a minus over here. Since it's getting squared, the minus will automatically be dissolved. So we are just omitting the minus over here. Minus 4 into p plus 1, 8p plus 1 is equals to 0. 36p square, 24p minus 8p square plus p plus 8p plus 1 is equals to 0. 36p square, 24p plus 4 minus 9. P minus, sorry, it won't be positive. It will have minus sign. Minus 4 is equals to 0. So first of all, we just cancel these two out and we have 4p square and minus 12p, I think. Now take 4 as common. Don't take 4 only. Instead, take 4p. P
p minus 3 is equals to 0. Now what we have? We have 4p is equals to 0. That is p is equals to 0. That may be one solution. And another solution is p minus 3 is equals to 0 and hence p is equals to 3. So the value of p can be 0 or 3 to have equal and real roots for this quadratic equation. Okay. I hope you understood. Okay. So आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, क्लास 10 का एडमिशन जो कि माध्यमिक बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उसका एडमिशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि नया 10 में मतलब नए 10 में एडमिटेड हुए हैं, जो लोग जो 9 से अभी 10 में एडमिटेड हुए हैं, प्रमोटेड हुए हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस हमारे यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. You can contact us if you have any contacts, anyone you know who is from West Bengal board, क्लास 10 स्टूडेंट, वो हो सकता है आपका कोई भाई बहन हो या फिर आपका कोई नेबर हो या फिर आपका कोई भी रिलेटिव हो, तो उनको आप बोल सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकते हो, ये चीज उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी आप लोगों के जैसे हमारे साथ जुड़ सके. एंड माध्यमिक एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से माध्यमिक एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक लास्ट मिनट सजेशन है जो कि पर सब्जेक्ट ओनली 99 रुपीज में मिल रहा है. यू कैन कलेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम अस एज एंड यूज इट एज योर प्रैक्टिस सेट. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू ऑल. जैसे आपको पता है हमारा लाइव क्लासेस चल रहा है सीबीएसई का. आपका कोई भी अगर जान पहचान वाले हो, उनको प्लीज ये चीज कन्वे कर दीजिए. हमारे क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, 3 से 4 बजे हमारा लाइव क्लासेस होते हैं और द सब्जेक्ट्स दैट इज टेकन ओवर हियर आर फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ईवीएस एंड बंगाली. सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज टेल देम टू कॉन्टेक्ट अस. जैसे आप लोग देख रहे हैं, उनको भी ये लाइव शेयर करना ताकि वो भी ये चीज देख सके और अगले लाइव में हमारे साथ पार्टिसिपेट भी कर सके. सो वी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे नेक्स्ट लाइव के लिए वेट कीजिए और हमारे साथ लाइव में पार्टिसिपेट कीजिए. और we will come back with another live. Till then, take good preparation for your examinations and stay healthy. Thank you.